Good morning, students. Today's lecture is shadow pricing in project management, and this is a very important topic which is from examination point of view. क्योंकि एग्जाम में एक बार आपका आ चुका है ये टॉपिक shadow pricing. So we are going to discuss it today. I have told you and taught you about the SCBA और social cost benefit analysis. जो shadow pricing का concept है ये यहीं पे apply होते हैं. दो तरीके की pricing होती है. एक होती है economic pricing, जिसमें कि हम मॉनिटरली किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी प्रोडक्ट गुड्स या सर्विस के कॉस्ट को उसके प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. बट इसके पीछे बहुत सारे ऐसे सोशल और सोसाइटल फैक्टर्स हो सकते हैं विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व रहती है. ठीक है, तो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ shadow pricing, why only in developing countries this concept is used, factors affecting the shadow pricing, basis issues in shadow pricing, benefits of shadow pricing, its limitations, and the conclusion. So as we know about the project appraisal concept, first of all, we have to identify the opportunities which are related to a particular project or alternatives which are available regarding this, the idea generation, then idea screening and all these things. So this is the project identification or concept formulation phase. After that, we come to the project appraisal. So project appraisal involves the total feasibility study of a project from various point of view, whether it is a social, technological, economic, financial, and other matters. Then comes the social cost benefit analysis, capital budgeting techniques, financial analysis, all these things we have studied, and then the shadow pricing. So shadow pricing का जो concept है इसका एक background है, like it measures the social cost benefits of a project, and this concept is mostly used in the developing countries like India, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, नॉट इन द डेवलप्ड वन, क्योंकि वहां पर जो शेडो इनविजिबल या जो इंटेंजिबल अनमेजरेबल प्राइसिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो उतने ज्यादा प्रिविलेंट नहीं होते हैं. प्रॉक्सी वैल्यू ऑफ अ गुड. सो शेडो प्राइस इज एन एस्टिमेटेड प्राइस for something that is not normally priced or sold in the market. So basically ऐसी चीजें जो कि हम नॉर्मली प्राइस नहीं करते हैं मार्केट में, जिनकी प्राइसिंग हम नहीं निकाल सकते मॉनिटरली, उससे रिलेटेड होती है उसकी शेडो प्राइस में. वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द शेडो और द रेपरकशन ऑफ द प्राइसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और गुड और सर्विस. शेडो प्राइसिंग कैन प्रोवाइड बिजनेसेस with a better understanding of the concepts of the cost and benefits associated with the project. However, shadow pricing is inexact as it relies on the subjective assumptions and lack reliable data to fall back on. तो बेसिकली ये सिर्फ सब्जेक्टिव assumptions पर बेस्ड है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पर बेस्ड है, केवल उसके कॉन्सेप्ट्स को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को उसके बेसिस पे उसकी हम प्राइसिंग कर रहे हैं. हम कोई मॉनिटरीली क्वांटिटेटिव टर्म में प्राइसिंग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिलेटेड टू द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. शैडो प्राइस मींस approximated or estimated economic price of a good for which there is no pricing done, or the process of pricing such goods for which there is no pricing done or whose price cannot be determined easily. बेसिकली ऐसे गुड्स की, ऐसे सर्विसेज की, ऐसे सॉल्यूशंस की हम प्राइसिंग यहाँ पे करें जिनका प्राइस इजीली डिटरमाइन, जिनका पहले से कोई मार्केट प्राइस या कोई पर्टिकुलर ऑनगोइंग ट्रेंड सेट नहीं है. इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज अ मैक्सिमम प्राइस वन वुड बी विलिंग टू पे फॉर एन एडिशनल यूनिट if the benefit from an additional unit is more than the cost associated, the entity will proceed accordingly. So why it is used in developing countries? Because the price determination is in the imperfect market conditions. So as we know that there are different types of competitive structure of market, such as perfect competition, imperfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, and so on. So basically जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ की जो मार्केट है वो इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में होते हैं, परफेक्ट मार्केट में नहीं होते. परफेक्ट मार्केट कंडीशंस आर दो जहाँ पे there are large number of buyers and sellers and no single investor or customer can influence the whole market. But यहाँ पर ऐसा नहीं होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, because the wealth is concentrated in the hands of few, और जो information है वो भी
फ्री फ्लो नहीं है, मैनिपुलेटेड है, बहुत सारा करप्शन भी है साथ में. So because of that, this is a condition of imperfect competition. In such kind of business scenario, it is important to consider the shadow price of a project. Second is the underemployment at existing wage rate. जिस wage rate से employment मिलना चाहिए उस wage rate से भी employment नहीं मिल रहा है. Underemployment की condition भी है. Exist deficiency of funds at existing rate. तो जो funds हैं उनका existing rate से वहाँ पर deficiency भी है. फॉरेन एक्सचेंज रेट, प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट, प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट है. तो ये सारे कंडीशंस हैं जिनकी वजह से शैडो प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत रेलिवेंट है व्हाइल कंसीडरिंग द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. Then the factors affecting shadow pricing, it involves the rationing of commodity. Basically, as we know that our resources are very limited and scarce, and our needs and wants are unlimited, so we need to be economized. हमें economize होने की बहुत ही जरूरत है. तो for being economized, we have to consider not only the explicit price of the product, but the implicit factors associated with it also. So that's why the shadow pricing is important, and it affects the a project. Then the minimum wages, which has to be paid to the workers and laborers. Then the foreign exchange restrictions, basic issues of the shadow pricing, which involves the concept of tradability, buying and selling of goods and services, and the kind of distribution channel which is involved in it. Sources of shadow prices, किन sources को consider करके हम shadow price को determine कर रहे हैं. Then the taxes, they may be the direct as well as the indirect taxes. Direct taxes में जो भी income tax in terms of profitability company pay कर रही है, इसके अलावा जो indirect tax में GST pay कर रही है company, goods and service tax. Then the consumer willingness to pay. Consumer willingness to pay is related with the demand of the product. So consumers willingness to pay is also an important factor while considering the social cost benefit analysis. जब मैंने आपको social cost benefit analysis पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि only those projects are socially as feasible in terms of SCBA in which affect society at a large, and in which the consumer or the user are willing to use that kind of solution, goods or services at a large level. Otherwise it is of no use. So if the consumer are willing to pay or and use the particular goods or service which is rendered by that project, then only it is useful, otherwise not. Then its benefits include the best and convenient tool, optimum allocation of resources, considers the economic opportunity cost, avoid the underpricing. Let's discuss about its limitations. So since it is just based on assumptions and some hypothesis, so it may be true or not. So it also lacks the universality, as it is applicable in some countries where in other it is not. जैसे हमने बात करी कि developing countries में ये ज़्यादा applicable है as compared to the developed one. So universality नहीं है इस concept की. Then non-availability of adequate and reliable data. इसके लिए कोई proper adequate या reliable data हमारे पास में नहीं होता. We can just estimate, we can assume, we can only assume and estimate on a rough basis. Then static and timeless concept है ये, कोई बहुत updated, बहुत dynamic concept नहीं है. Indeterminable concept है. Biasedness आ जाती है इसमें in terms of the responses और sample. जो हम questionnaire fill up कराते हैं तो वहाँ से जो भी project manager, जो भी experts होते हैं वहाँ से biasness आ सकती है. Then the failure to reflect the long-term social opportunity cost. It does consider the social opportunity cost, but just in the short term, not in the long term. So that's it about this lecture, student. Thank you very much for listening.